इंस्टाग्राम कोच जीतू। जीतू 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 इज योर गाय। लाखों लोगों को अब तक आपने सिखाया है कि इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना, लेकिन आपके अकाउंट में अभी तक 1 मिलियन क्यों नहीं है? मिस्टर जितेंद्र चौधरी। जीतू एक अलग आदमी है। This guy has a lot of actual true insights about Instagram. जस्ट रिसेंटली मैं अभी आपका अकाउंट देख रहा था, आपने अपना पुराना अकाउंट बंद करके नया अकाउंट स्टार्ट किया। इसका कोर रीज़न क्या है? मतलब कहीं ना कहीं वो पुराने अकाउंट में क्या व्यूज़ नहीं आ रहे थे? When I deleted my account, a lot of people came to me and said, इस बार किया तो गया, बहुत बार बच चुका है, इस बार नहीं बचेगा। Still bounce back. I can start it right now. मेरे को समझ में आ चुका है। तो मुझे अभी आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी 5 निश है जिसके अंदर अगर हम एंटर करें तो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते So I'll give you two biggest niches or biggest industries where you can build a billion-dollar empire, and there are only two industries. इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं है। हैं। ये बताइए कि अगर मैं 0 फॉलोवर पे हूँ, मुझे 10,000 फॉलोवर पे जाना है और विदिन 30 डेज जाना है, तो क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए? There is only one rule. क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक वायरल रील में जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ऑडियंस तक पहुँच सके? Don't think about क्या 3 चीजें रख दूं मैं वहाँ पे, क्या चीजें चेंज करूँ. The only thing that you should focus on is क्या क्या तरीके हैं जिससे पैसा कमा सकते हैं इंस्टाग्राम को यूज़ करके? मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि you only do one thing which is you sell. Views गिर रहे हैं, उसको उठाना not a big deal. खुद के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, and this is what I do for a living. जीतू भाई, आज का हम डिस्कशन का एजेंडा यही रखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी व्यूअर है, कोई ऑडियंस है जो अपनी जर्नी आज एकदम स्क्रैच से चालू करना चाहता है, आज से सोच रहा है कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊँ और अपने कंटेंट क्रिएट करूँ और महीने के मुझे 8-10 लाख रुपए कमाने हैं, तो पहले तो मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है इंस्टाग्राम के थ्रू, और अगर हाँ तो कैसे? The moment this word comes possible, right? I simply tell humans. मैं humans जानबूझ के humans word use कर because कुछ लोगों ने आजकल हमें animals बनाना शुरू कर दिया है. So yeah, when I talk to humans and I'm like, you know, the moment you say the word possible, if you think it's possible, it's possible. If you think it's not, it's not. Right? Because I can give you tons of examples where the guy or the creator was in such a dangerous situation that it was not possible for him. But because he believed it's possible, it was possible. Right? So yeah, if you think it's possible, it's possible. If you think it's not, it's not. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। आप क्या Exactly. सोचते हो? If- 100% If I think it's possible and you think it's not, it's not. करेक्ट। If you think it's possible, it is 100% possible. And लोग बोलते but जीतू logically I don't see any area. And I simply tell them, the moment logic ends, magic starts. Right? So stop operating from the world of logic. Most people don't even need logic. They are just creating a barrier so that they can have that barrier as a shield to not start. करेक्ट करेक्ट। Everything is possible if you think so. लेकिन जीतू भाई, इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, लाइक मैं भी इंस्टाग्राम पे अभी बहुत अभी तो बोल सकते हैं सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत लगे लोगों के मैसेज आते हैं कि यार हमने इंस्टाग्राम चालू तो कर लिया, हमने 8 रील 10 रील 20 रील बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर स्टक हो जाते हैं। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और मैं जस्ट अभी आज के डिस्कशन के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि यार 83% लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे आके अकाउंट बना लेते हैं, कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन वो महीने के 10,000 रुपए तक भी नहीं कमा सकते हैं। जी. तो क्या प्रॉब्लम सच में माइंडसेट है या कुछ और है? I will give you a more better insight by the way. I mean, what you give us was also very new for me. ठीक है? But there are 8 crore creators in India, which is 80 million. And out of 8 crore, only 1.5 lakh are able to generate income. Out of those 1.5 lakh, 90% of the creators makes around 15,000 rupees a month. Right? So there's a ratio which says only 1 out of 533 creators succeeds. Now everybody says that business is tough, right? 10 out of 9 businesses fails, which means one works. That's a 10% success ratio for the first 5 years. But in content, only 1 out of 533 creators succeeds, which is 0.19% success ratio. And the simple reason for that is business जो है, business world, वो kings के टाइम से चलता है, जब से गोल्ड बना था, करेक्ट। इनकम पैसे बने थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वी हैव बीन डूइंग बिजनेस सिंस लाइक स्टोन एज। पहले हम ट्रांजैक्शन करते थे, गुड एक्सचेंज करते थे, फिर गोल्ड आया, फिर मनी आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंटेंट ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था अराउंड 2010, जब इंस्टाग्राम अच्छे से आया, राइट? यूट्यूब केम इन 2004। सो टेक्निकली इफ आई से इट्स बिन ओनली 2 decades राइट नाउ जब से कंटेंट वर्ल्ड शुरू हुआ है। करेक्ट। Majority of the people treat content
a little harsh language, but they treat content as their side chick, Hmm. right? They don't consider them as their wife. Correct, correct, correct. And they think content post करते जाओ, कुछ ना कुछ चल जाएगा and हो जाएगा. So what they do is they try to you know, बोलते हैं ना अंधेरे में तीर लगाना, something like that analogy. So try to do that, which is what majority of the people do, which is what majority of the people do in their life, by the way. But again, come back to content. अंधेरे में तीर लगाते हैं, कभी कभार तीर ना गलती से लग जाता है, बट कहाँ लगता है उनको पता नहीं है. So what happens is जब वो तीर लग जाता है, कुछ चल जाता है, बट वापस वो उसी सिचुएशन पे आते हैं because they don't know what's working and now they don't know how to operate. Correct. So number one thing that I tell to people is don't consider content as your side chick. Hmm. It can transform your life. Content has transformed my life. It can change yours. Absolutely. Right? Absolutely. I was a guy who knew nobody, who respected nobody, who never got love, attention, fame, anything. But the day I started respecting my content and started treating my content as the first priority, trust me, my life has been changed. Before, मैं हमेशा कहता हूँ कि before doing something, always have an intention setting in your mind what you are doing and where you are going, where you are going. मैं ये चीज से अग्री करता हूँ. But the entire intention behind making money is to serve more. The moment your intention of making money or creating content is wrong, trust me, even if you make money, even if you make content and it gets views, it doesn't matter. And hence, the very first thing that I do in my clients, to my students, to every person that I get into my company, right? One thing, intention setting. What we are doing, why we are doing. And the moment you do that, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो. Correct. Right? But yeah, if you have an intention of making money for yourself, it's perfectly fine. But do you have, for you right now, maybe 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh is enough. उसके बाद क्या? And hence we think bigger. We think for our family. We think for our society. We think for everybody else. करेक्ट करेक्ट. सो सबसे पहला स्टेप ये आएगा कि हमें इंटेंशन क्लियर रखना चाहिए. क्या इंटेंशन रखे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं वो लोगों के मन में यही होगा ना कि यार कंटेंट क्रिएशन चालू करना है, क्यों करना है. 2-3 चीज़ें सब मन में रहेगी. सबसे पहले तो होगा कि भाई इंस्टाग्राम से लोग पॉपुलर होते हैं तो मुझे पॉपुलर होना है. दूसरा इंटेंशन रहेगा कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी को क्या करूँगा अगर पैसे ही नहीं आएंगे तो. सो घर भी चलाना है, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे भी वो लेविश लाइफ जीनी है. तो क्या ये सही इंटेंशन है? अगर नहीं तो क्या करें? कुछ सही गलत नहीं है. अच्छा. आपके लिए क्या सही और मेरे लिए क्या सही, that matters. If you are a person who thinks that I give good value to your life, then simply hear me out that if you have a wrong intention and the right direction, the direction would change. If you have the right intention but wrong direction, the direction will still change. And the only intention that I have in my mind is giving. As a creator, as an entrepreneur, as a business owner, as a human being, as a man, as a husband, which I'm gonna become in future for sure, as a dad, जो मैं बनूंगा, as a son, as a brother, as a leader, as a founder, I only have one intention: to give back. Right? Because majority of the humans have a really small kind of shield on their mind. वो उसके अंदर ही सोचते हैं. मैं कहता हूँ एक बार सोच के देखना शुरू करो. चाणक्य इसको सिखाते हैं. जिनको नहीं पता चाणक्य, बिकॉज सो ही वाज द वन जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था. करेक्ट. एंड ही इज द किंग मेकर. ही नॉट अ किंग, ही इज अ किंग मेकर. राइट? उन्होंने कहा था कॉन्सेप्ट कॉल्ड आन्वीक्षिकी. राइट? आन्वीक्षिकी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ थिंकिंग. तो वो चंद्रगुप्त को हमेशा कहते थे कि चंद्रगुप्त, नो मैटर व्हाट यू डू, बट इफ योर थिंकिंग डायरेक्शन इज नॉट करेक्ट, trust me, you will go in wrong direction. And that's why top leaders, prime ministers, have a job that nobody has. Thinkers. ट्रू ट्रू ट्रू. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई और ये चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि इनफैक्ट मैं मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊँ तो मैंने भी स्टार्टिंग में जब भी कंटेंट क्रिएशन चालू किया, पहले मैं वैसे ही कंटेंट बनाता था जो मुझे अच्छे लगते थे. मुझे देखना अच्छा लगता है, मैंने बनाया. मैंने देखना अच्छा लगा, मैंने बनाया. लेकिन बाद में मैंने एक स्विच चेंज किया. मैंने आपके वीडियो सुने और मुझे एक चीज़ मुझे उसमें बहुत अच्छी लग गई थी कि आप हर रील के बाद सोचो कि सामने वाले की लाइफ में क्या चीज़ इसमें से ऐड होगी. इफ़ कोई एक चीज़ भी ऐड हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको लोग देखना पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे. इसको मैं और सिंपल मैनर में कहूँ तो, इफ यू आर नॉट गेटिंग व्यूज राइट नाउ, देन सिंपली थिंक अबाउट दिस, दैट इफ आई पोस्ट दिस रील राइट नाउ, व्हाट इज दैट वन रीजन द सामने वाला गाय वुड लव टू वॉच दैट रील. The moment he watches that reel,
what is that one reason you would love to come to my profile and follow me? Correct. If you don't have a reason, I don't think you should deserve followers. I don't think you should post that reel right now. Correct. Right? And hence, always when you sit for a reel, before posting a reel, sit and think, why would someone watch this reel? Why would someone follow me? तो बेसिकली सर इसमें कैसा होता है कि इंस्टाग्राम पे अगर मैं आज कंटेंट क्रिएट करना चालू करता हूँ तो देर आर सो मेनी थिंग्स राइट, मतलब मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी बात करूँ तो भाई मैं क्या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ, व्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या बिजनेस के बारे में बात करूँ, क्या फाइनेंस के बारे में बात करूँ, कौन से टॉपिक पे बात करूँ, ये एक हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो अपना एजुकेशन अभी कर रहा है, तो क्या टॉपिक के बारे में वो बात करना चालू करें इंस्टाग्राम पे, ये एक हमेशा क्वेश्चन रहता है। आई थिंक इसे टेक्निकल टर्म में कुछ निश बोलते हैं, निश सिलेक्शन। ये क्या होता है और कैसे वो एक टॉपिक तक आए, कैसे फाइनल करे वो टॉपिक कि भाई इसी के बारे में मैं बात करूंगा। So the moment you think about niche topic or anything like that, the very first thing that I tell to people is only one question: how big do you want to go? अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनना है, महीने का 1-2 लाख कमा के खुश रहूँगा, मेरे को ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए, 1-2 लाख फॉलोअर्स है ठीक है, सॉर्टेड हूँ मैं, इन दैट केस चूज वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि तुम्हें ग्रोथ तो ज़्यादा करना नहीं है, तुम्हारा लिमिटेशन आ चुका है, तो तुम्हारे माइंड में लिमिटेशन है कि मुझे इतना ही करना है। इन दैट केस कुछ भी चूज करो, 1-2 लाख बहुत ईजी होता है पैसा कमाना। सो द मोमेंट से हाउ बिग डू यू वांट टू गो, नाउ लेट्स से इफ समबडी सेज आई वांट टू गो बिग लाइक ग्रांट कार्डोन, ठीक है, ना ग्रांट कार्डोन इज अ पर्सन जो कि बिलियनर है विद अकाउंट, लाइक ही इज अ गाय हु हैज मल्टीपल बिजनेसेस, वो उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, वो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, रियल एस्टेट भी है, कैश फ्लो करके उनकी पूरी कोचिंग एम्पायर है, ही हैज अ कोचिंग बिजनेस ऑल्सो, मल्टीपल स्टफ, राइट। मैंने अभी कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि हु डू यू नो ग्रांट कार्डोन फॉर, 7 people came in. One guy said, I know Grant Cardone for his real estate. He's a real estate guy. Oh, yeah, he's a real estate guy. The second guy comes in, he's like, no, he's a cash flow guy. मैंने उसे cash flow सिखा था, मतलब he also helps you to recover your debts, he helps you to make money, sort your finances. The other guy came, third guy came, he's like, no, he teaches you sales. He's the sales guy. भाई उसने जो सेल्स सिखाई है मेरे को, आज मेरा जो कंपनी वो $1 million कंपनी, because he taught me sales. The other guy comes and says, no, he's a parenting guy. Okay, have you watched this podcast where he talks about how he raises daughters? And I'm like, no, I haven't watched, but you might have watched, and I trust you. And he's like, he also lets you know how do you raise their sons and daughters. He talks a lot about parenting, relationship. The other guy comes and says, no, he teaches you how to have a fulfilled life while having success. I simply asked all of them, are you confused who is Grant Cardone? So when you want to go big, you have an umbrella of topics that you know, and you can teach anything. People will come and choose what to select. Correct. They will come and choose, okay, I have a real estate problem. I'm going to solve my real estate problem with your content. Right? I'm a mom. I'm not a father. I'm not a mom. So मैं parenting content नहीं देखूंगा. But if there are mom, if there are dads, they're going to go and watch that podcast out. Right? So when I say that how big do you want to go, and if you say that you want to build $1 million or $1 billion empire, by the way, most people say it, but they don't mean it. बोलते हैं बस. If you really mean it, if you really want to build $1 million empire or $1 billion empire, you don't need a niche. It's a trap. It's a trap that coaches tells you because they don't know anything else. So they put a statement as niche. One thing that I've asked my community, that the day I say you that you have to be trapped in a niche, what do you feel? They said suffocated. What else? They said trapped. Exactly, guys. It's a trap. Correct. Okay? Because ultimately when you want to go big, it's an industry. It's not a topic anymore. It's an industry. It can be self-growth industry. It can be money. It can be relationship, health. And you teach multiple aspects into that industry now. If you want to go big, don't select a niche. Have an industry. That industry can be, let's say if we're talking about health, exercise सिखाओ, injuries ठीक करना सिखाओ, mental health सिखाओ, emotional health सिखाओ, physical health सिखाओ, diet सिखाओ, nutrition सिखाओ, lifestyle diseases cure करो. Do you see? So big. People are like, भाई इतना कुछ पढ़ाएंगे तो फिर confused नहीं हो जाएंगे audience. The Grant Cardone example. Nobody gets confused. It's you who thinks I cannot teach this many topics. And it's a mindset problem. Correct. I tell people 99% of the time, humans don't have problem. They have a mindset problem. There is no problem in real life. Every problem that you have right now is here. And 99% of the problem
never happens. Hmm. And that's what I tell people, 99% of the time, it's a mindset problem, not a real problem, right? So if you're wondering that maybe that, I can't teach these kind of topics, yes, you're right. You don't have that mindset, right? Correct. When you think of making $1 million empire, $1 billion empire, if you really mean it, if you really know the science, you have to go really big and you have to create a really big impact. Hmm. This many people needs a huge category, right? And there are only 3 desires every human have. If you're wondering about niche, just think about these 3 desires first. Number 1, health, wealth, and relationship. There is no other desire humans want. There is no other desire humans have. Every desire comes under this 3 desire. If I want to have a lot of followers, it's a wealth desire, right? I want to make a lot of investment, it's a wealth desire. I want to build a $1 million company, wealth desire. Maybe I want to have a really good life with my partner. It's a relationship desire. Maybe I want to have a secure life. Maybe I want to have a independent life. Again, it's a wealth. It's a wealth desire. So every human have this 3 desire. You think your content can be a vehicle to achieve these desires now. But what most people do is they treat their content as a goal. I tell people, treat your content as a vehicle. 100K, 1 million, 10 million, these are not goals. Correct. These are not goals. These are vehicles to reach these 3 desires. Hmm. If you can solve these 3 desires, so I'll give you 2 biggest niches or biggest industries where you can build a $1 billion empire, and there are only two industry. इसके ऊपर कोई industry नहीं है. अच्छा. Number 1, money. That's why Russell Brunson is rich. That's why Alex Hormozy is rich. That's why obviously this guy is Grant Cardone is rich. Second, after money, peace. Hmm. That's why Sadhguru has a lot of followers. Sri Ravi Shankar has a huge impact. He has a huge influence. Peace is the only thing that people need even after money. Hmm. Or I would say even before money. Perfect. Right? Perfect. So if you can solve these problems, money or peace, you will have a huge amount of people, by the way. When I say huge, it's like more than 100 million people every month coming down to your profile. Right? If not, have these 3 desires. Uske andar choose which desire you can fulfill. If you are a self-help coach, okay, cool. You are fulfilling basically the health, wealth, and relation 3 desires. Correct. Right? If you are a nutritionist, आप लोगों के health sort कर रहे हो. That's it. There are no niches. There are only desires. And one more thing I want to emphasize here. There is nothing called as boring niche. There is something called as boring creator. There are no boring niche, only boring creators. Because लोग हवा बेच के पैसा कमा रहे. Hmm. Right? If you know your stuff, you can make money out of it. Right? I teach Instagram. 2 साल पहले Instagram से कोई बंदा महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहा था. It was a blue ocean for me. I started making 50. But it was not because of my niche. No. It's because the way I create the content. It's never about the niche. It's always about the creator. True. Right? You can literally sell stuff that people don't want. If you are somebody who literally believe in your product and you know how to do it, if you know marketing, trust me, you don't need needs. You can create needs, you can build habits. परफेक्ट परफेक्ट. बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने समझा दिया सर, और एक समझ गया कि 3 डिज़ायर है, वो 3 डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हमें काम करना चाहिए, या तो कोई एक इंडस्ट्री पकड़ो. बट अगेन एक कन्फ्यूजन ये होता है कि चलो ये समझ गया कि किसी को हेल्थ, वेल्थ, मनी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मुझे चलो गाइड करना है, मुझे वो उनके डिज़ायर्स अचीव करवाने हैं. लेकिन अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स कि स्टार्ट कहाँ से करें. मतलब लाइक इफ आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं अपनी पढ़ाई करके अभी आया हूँ, मुझे क्रिएट करना चालू करना है, मैंने समझ लिया कि हाँ यार चलो मैं किसी का वेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा, जी. जिससे The very first thing that I tell people, sorry to interrupt you, but yeah, the very first thing that I tell to people is solve your own problems. Basically I don't cater to a college student. मेरी audience जो है they're experts, right? They have experience more than my age. करेक्ट. But they're experts, right? So I don't have this problem of somebody coming out to me and like I'm a college student. So इससे मैंने वो answer दिया. But anyways, if your question is around that, first, if you are a college student right now, trust me, nobody hates you. You are just not good at anything. You are not good at anything right now, and don't try to make money. Don't try to make money. If you are somebody right now who doesn't have skills,
don't even think of making money. Right now you should be shameless. मैं हरमोजी इसको बहुत अच्छे से बोलता है that if you don't have money, you shouldn't have shame, and if you have shame, you shouldn't have money. Right? If you're a college student right now, the very first thing they should do and focus on is building expertise and building skill set, so that people can come down to your content and watch you for a reason. Trust me, tell me, if a college guy comes down to you and says, sir, I don't have any skill, I'm exploring right now, I don't know anything, I'm starting on my career, will you give him a job? No. The reason is not that you hate him, but he's not good at anything. And that's the true fact. Most people in their college days, they want to make money. No. That's you'll come back to zero. When I started my journey, I used to charge below 10,000. I used to shoot videos 8 times a month. I used to go to people's houses, bus mein jaake, edit their videos, strategize their content, research for them, generate ideas, manage their account, create strategy. पता नहीं क्या सब कुछ करता था मैं, and all of this for below 10,000 rupees. But because I charged less, I got more experienced, and because मैंने कम charge किया, I was able to understand ins and outs, up and down of social media. And today, people even pay me 5 lakh rupees just to talk to me. Because when I started, I never thought about making money. For me, it was becoming so good, nobody can replace you. Correct. And hence, don't think about making money. Don't think about having a lot of followers. Be so good in your expertise that nobody can replace you. And if you're a guy who cannot be replaced, people will pay you more than your competitors, even if you give them less. True. अमेजिंग. नीश के बारे में ही बात कर रहे तो एक और चीज़ जो मेरे मन में है, बहुत बार हमने सुना है कि कोई पर्टिकुलर नीश बहुत बार सैचुरेट हो जाती है कि नहीं यार, अभी ये नीश के अंदर इतने से ज़्यादा फॉलोवर बनेंगे ही नहीं. पहले ही रोक रहा हूँ, होता ही नहीं ऐसा कुछ. अच्छा. ठीक है. Niche never gets saturated, the audience gets saturated. Right? Example, if I'm catering to a market of, let's say, coaches, this I do consult coaches, right? So, and I'm pretty aware कि saturate होगा. Why? After a point of time, अगर मेरे महीने के 100 million views आ रहे हैं, which is easy to pull off, we can do it easily. अगर आ रहे हैं, after a point of time, the amount of coaches वो नहीं है और वो बन रहे हैं, वो अलग बात. Aspiring coaches I can target, but वो नहीं है और. In that case, मेरी audience saturate हो चुकी है. मेरा niche अच्छा है. Niche is Instagram growth. Audience क्या है मेरी? Coaches. So now you double down on the audience. Coaches, cool. I'm gonna cater to now experts. अब experts में सिर्फ coaches नहीं आते, consultants भी आ जाते हैं, experts भी आ जाते हैं, advisors भी आ जाते हैं, सब आ जाते, teachers भी आ जाते हैं, education personal brand भी आ जाते हैं. I can cater to service providers. उसमें freelancer भी आ गया, उसमें कोई digital marketing वाला agency वाला भी आ गया. So you don't double down on niche, you double down on the market or double down on the audience. Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, क्योंकि इवन मैंने कल एक स्टोरी रखा था, मैंने बताया था कि जीतू भाई मिलने वाले, बताओ आपके क्या क्वेश्चन है. तो एक पर्सन ने बताया कि यार इनफैक्ट ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है. लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा ही एग्जांपल दूँ तो मेरे ही निश के अंदर मैं जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ, बिजनेस आइडियाज़, सिमिलर वही बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, सिमिलर वही टॉपिक के बारे में 3-4 दूसरे भी क्रिएटर है, और हर क्रिएटर के साथ सेम प्रॉब्लम है कि वो भी ये 1 मिलियन 1.2 मिलियन के आसपास आके रुक गए हैं. तो फिर the reason is the niche is not boring, or I would say the niche is not a problem. Your niche is like you tell about, you help people to, let's say, generate business ideas. Ki if you don't have any idea, maybe you can pull this off and you can start your business. Correct. So can I say that you help people to start their business? Yes. Good niche. The category of below 50,000 rupees can be changed. Now. Here's a business idea for you under 50 lakh rupees. The niche is same. The audience is different right now. True. And that's why you also have one more problem, which is the people that follows you. I will tell you a business problem right now just by your niche. The number one problem that you have right now is people don't buy from you, and even if they buy, they don't pay you a lot. Not able to charge high ticket to them. Let's say you're not selling to them, but even if you do, they won't pay you high, because these are the people who are watching reels to have an idea. इनके पास idea नहीं है. Number one, which is a very basic level of problem. तो मैं इसको बोलता हूँ, now again, जैसे topics में लोग कहते हैं कि जीतू, how to have a quality of audience. If you want a quality of audience, simply do this. Simply ask yourself, what level of problem do I solve? Example,
as you said right now that you help people to start their business. It's a very basic problem. It's an initial problem. करेक्ट. Problem में एक होता है initiator. Okay, so there are 5 levels of problem. The first is initiator, as you said right now, how to initiate a business. उसके बाद आता है mediator, stabilizer. अब ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट you are into initiator right now. Now initiator का प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आपके पास वो लोग हैं जिन्होंने इनिशिएट ही नहीं किया. सोचिए उसने इनिशिएट ही नहीं किया, ऑडियंस का करेंगे भी क्या? उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है. मेरे पास आइडिया खत्म नहीं, उसको आइडिया आते नहीं है. समझ रहे हो? सो he wants ideas, plus he wants idea below 50,000 rupees. That means he doesn't have money. That's So why he we are will looking. arrange money, and hence your number one problem in your business, in your content would be कि people won't buy high ticket from you. If you want to change that, simple. Let's do, instead of teaching business ideas, initiate, simply change the level of the problem. Example, if I teach people how to have more profits, I would have people who are making revenues right now. I'm again into the same niche, helping people to launch businesses, helping people to grow businesses. Correct. But the level of problem that I'm giving right now, I'm solving right now, is bigger, right? So the bigger problem you solve, the more money you make. The bigger the problem, the more the money. ग्रेट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आपने दे दी है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा आपका आप पैसा बना सकते हो. तो मुझे अभी आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी 5 निश है जिसके अंदर अगर हम एंटर करें तो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो तभी ऐसी आ गई. क्योंकि ऑब्वियसली आज हर इंस्टाग्रामर आपको फॉलो करता रहेगा, हर इंस्टाग्राम आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, तो आपको पता होगा कि कौन सी निश में कहाँ पर कौन सी फील्ड में ज़्यादा पैसा बन सकता है. I have consulted people who have a really, really, really different, and I would say not a really high demand niche, but because this guys knows their stuff, they make more money than a guy who is into a high demand niche. And I always tell people it's never about the niche, it's always about the creator. The moment you ask me what are the top 5 niches you should go for, that's against my laws. I don't have a principle. I'm like, I don't think about it. In terms of, let's say when you want to pull off investments, when you want to pull off that kind of stuff, in that case you definitely need to give insights to your investor, because a lot of people comes down to me, they're like, the reason we create content is to pull off investors. Correct. In that case, definitely you should think about it, and then you ask yourself, how big do you want to go, and on the basis of how big do you want to go, how big is the problem and how big is the market, and then you know your answer. True. Right? ये जो questions आते हैं ना, these are nothing but a shield to not start content. Not start content. Which Absolutely. Niche is the single problem that ये जो word है niche, this 5-letter word NICHE. This 5-letter word has stopped 90% of the creators. Right? And मैं अपने 3D में बोलता हूँ लोगों को कि what if I tell you, मेरे पास 3D में लोग आते हैं 5-5 साल से नीश नहीं पता है, 5-5 साल से कंटेंट नहीं बना रहे, बोलते नीश नहीं पता हम लोगों को. मतलब तू 5 साल से तूने इसलिए स्टार्ट नहीं किया है सिंपली बिकॉज यू डोंट नो योर नीश. 5 साल में मैं 50 से ट्राई कर लूँ, मुझे नीश मिल जाता आज तक. Actually. Right? And what I tell to them is, what if I take the next 15 minutes, you will get your niche. मैं 15 मिनट के अंदर लाइव इवेंट में जिसकी 5 साल की प्रॉब्लम है वो 15 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ. ये कैसे होता है, मैं जानना चाहता हूँ. See, I mean, I do have like a step-by-step framework for that, and उसको हम अच्छे से इवेंट में कवर करते हैं. थोड़ा डिटेल में But if I give a structure right now, the very first thing I tell to them is you don't need a niche. So they have a free mind right now. They have an open mind. मैं लोगों को बोलता हूँ कि तुम्हें niche नहीं चाहिए first of all. Second thing, मैं वहाँ पे 5 ये दिखाता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ simply write down whatever you know about and whatever you talk about. So let's say I know about fitness, I know about content, I know about health, I know about business, I know about money. ठीक है? And then I'd simply tell them, rate yourself in terms of skill set. कि whatever you know and whatever you talk about. जब मैं लोगों को बोलता हूँ what's your passion, what would you like and everything, they get confused. What simple little question? What do you know about? What do you talk about? Very simple little question. Correct. Create a list of all the things that you like. People come to me and they create a list of 15 things. Like, भाई तेरे को 15 चीजें अच्छी लगती है. They create a list of 15 things. And we pick one out of those 15 within 15 minutes. Right? So, and then my question comes down to simply rate your skill set. So let's say health, 3.
जब तुम्हें हेल्थ में 3 आता है तो फिर तो क्या सिखाने का करें? मतलब नहीं है, तो वो True. कट हो चुका है वहाँ पे. तो you based on the skill sets, at the same time sometimes also say to people that if you don't have a skill you can still start your niche, because कभी कभार skill set आपको किसी में भी नहीं होगा, सही है. right? So you can still start your niche, but again this is like a criteria. उसके बाद मैं लोगों को पूछता हूँ, second question that comes onto my sheet is, if I pick you up at 2 a.m. and you had a really messy day the entire day, right, where you had a fight with your wife, where you were not able to pull off a deal, where you were maybe, let's say if you're an employee and then you are called out by your manager, and you went to home, and at night also you had a fight with your wife, and then you felt that nobody loves you. This happens with every human. Nobody loves you, and then you had a sleep and you were literally crying on your pillow. In that moment somebody comes down to you and says, I have this problem. Would you be able to think about it? Solve छोड़ो. Would you even think about solving that problem? If the answer is like slightly yes, okay, cool. You can consider it. If you're like बिल्कुल नहीं, निकल जाएगा. 90% of the things that people says they love, they don't love. In that one question, they remove it. Last, जब वहाँ पे 3-4 questions और होते हैं जो थोड़ा अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ because वो थोड़ा in depth है. But yeah, these 2 questions you ask yourself, 90% things will go out. करेक्ट. उसके बाद आता है जीतू, ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास, तो 2 निश बची, ये दो में से सिलेक्ट करो. मैं सिंपल सा बोलता हूँ लोगों को, लेट्स डू वन थिंग. इसको बोलते हैं कॉइन फ्लिप मेथड. whenever you have 2 stuff, take a coin, head this, tails this, and what I tell to people is अपने दिमाग में बना लो, head ये है, tails ये है, and repeat this 15 times. head ये है, फिर tails ये है, head ये है, tails ये है, head ये है, tails ये है, so आपके नर्वस सिस्टम को पता चल जाए. And then I flip the coin, I keep it in my hand, and I'm like, Anurag, remove. But what do you want? तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार ये होना चाहिए. And मैं लोगों को बोलता मैं निकालने वाला हूँ, but what do you want? And then they are like, okay, I want this. बस मिल गया. इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, इसके बाद भी आते हैं इवेंट में जी, तो यार वो मेरे को मिल तो गया आंसर, मतलब ऐसा है, बट थोड़ा कंफ्यूजन है. ये होता है मेरा लास्ट अप तड़का, इसको मैं बोलता हूँ फाइनल तड़का, नीच तड़का होता है ये. मैं सिंपली वो बोलता हूँ, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. राइट नाउ यू वांट अ परफेक्ट नीश जिसके साथ आपको लगता है कि आप जिंदगी भर रहोगे. यू फील लाइक दैट दिस इज योर्स, बट दिस इज नॉट योर्स. आपके अर्ली करियर में लगता है ना कि शी इज द वन, बट शी इज नॉट द वन ब्रो, राइट? सिमिलरली यू फील वो नीश जो है, वो नीश आप जिंदगी भर लेके चलोगे. मैं बोल रहा हूँ भाई रुक जा, ये नीश तुझे जिंदगी भर लेके नहीं चलना है. यू डोंट वांट अ परफेक्ट नीश. राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ परफेक्ट नीश, बट डू यू रियली थिंक एनी टाइम यू स्टार्ट इट्स गोना बी perfect? So your start is wrong because you want to make it perfect, but it's not possible. Correct. So right now that guy wants कि जीतू नीच तो बढ़िया है, कुछ तड़का लग जाए, कोई परफेक्शन मिल जाए तो मजा आ जाए. कुछ नहीं होता ऐसा. एक्सेप्ट इट. यही है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है कोई रास्ता और है नहीं. ट्रू. एंड ना बहुत लोग ना अपने लाइफ में डिसीजंस बना ही नहीं पाते because they doubt themselves a lot. It's a simple decision. Do I want to teach this or that? You know yourself better than me. You know your stuff better than me. True. You know what do you want. True. And you still are not able to choose, and you're asking another human being, what do I like? Because you doubt yourself. And majority of the humans don't trust themselves. And then they expect that people would trust on them and pay them more. ट्रू. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जर्नी में. मैंने जब इंस्टाग्राम चालू किया था, आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि मैं क्या टॉपिक पे बात करूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया और अपने फीड्स देखे, रीसेंट के 10, 15, 20, 25, 30 रील देखे, और मैंने ऑब्जर्व किया कि यार मुझे क्या पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे इंस्टाग्राम पे वही दिखेगा जो मुझे पसंद है. यार मुझे हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें पसंद है तो वही दिखेगी, मुझे मोटिवेशन पसंद है तो वही दिखेगी, मुझे कुछ बाहर का खाना पसंद है तो वही दिखेगा. तो जो चीज़ मुझे पसंद है, अभी वो मैं जब अपनी स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिखा कि यार मोटिवेशनल बहुत सारी स्टोरीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं शायद ये मेरा हो सकता है. आई स्टार्टेड, मेरे अगर आप अभी भी पेज पे जाओगे तो स्टार्टिंग के 20-25 रील वही थे, मोटिवेशन. मैंने कोई स्टोरी सुनी, वो स्टोरी सुना दी, स्टोरी कहीं से सीखा और अपने टोन में, अपने टोनैलिटी में अपना मसाला डाल के दे दिया.
फिर वन पॉइंट ऑफ टाइम 20-25 रील के बाद खुद से आवाज़ आया कि नहीं यार ये तो नहीं, तो ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आई Very good. चेंज्ड। See? मतलब मैं चेंज करता गया और आज यहाँ पर पहुँच गया। अभी क्या होता है कि अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम टॉपिक चेंज करने की ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है यार, बिजनेस आइडिया बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, अभी चलो पॉडकास्ट में हम हैं तो पॉडकास्ट की रील्स डालेंगे, या तो कोई गेस्ट ने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दी तो वो डालने की ट्राई करेंगे, तो उसमें अगेन उतना व्यूज़ नहीं आते हैं, Yeah. तो अगेन वो नंबर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ये सेम चैनल पे रखना चाहिए, या अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मेरी निश चेंज हो जाए तो मुझे उसके लिए अलग पेज बनाना चाहिए। डिपेंड्स। जैसे अगर आपकी ऑडियंस है बहुत ही ज़्यादा इनिशिएट लेवल की ऑडियंस है हु डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट बिजनेस एंड यू सडनली टॉक आउट ऑफ नोवेयर, यू सडनली टॉक अबाउट हाउ टू मेक प्रॉफिट्स, they won't watch your content. And because you have a massive following, your view drop would go down. Can you accept that for a moment, for a while, like 1 year, 2 year, and still work on it every single day without looking at your numbers and teach that? If the answer is yes, you can try it out. If not, Understood. simply create a new account. Perfect. And then a lot of people are like, but yeah, ये account, it's an attachment issue. Actually. It's an attachment. You're attached to your numbers. The day a human is attached to his numbers, he gets stuck in his numbers. ट्रू। चलो ग्रेट। तो चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मेरे बारे में बताया कि मैंने अपनी रील्स देखी, मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने चलो एक नीश सिलेक्ट कर लिया। आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को एक आइडिया आ गया रहेगा कि क्या टॉपिक के ऊपर बात करनी है। अभी होता ये है कि जब चलो स्टार्ट करना है तो बहुत सारे एक्सक्यूजेज आते हैं कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, लाइट्स नहीं है, माइक नहीं है, तो कुछ तो चीज़ें रहेगी जो उनको रोकती रहेगी, कैसे उससे आगे बढ़े? When you say that कुछ चीज़ आपको रोकती रहेगी, when I started my content, तो हमारे घर में ना फर्नीचर नहीं था, तो हम क्या करते थे सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ से नीचे रख देते थे। एंड हम नीचे रखते थे ताकि फर्नीचर हर नीचे रखा हुआ है तो कोई भी वॉल खाली नहीं है, तो टेबल कहाँ लगाओ? तो मेरी ना बाथरूम की वॉल खाली थी, क्योंकि बाथरूम की वॉल पे आप कुछ लगा नहीं सकते। मैं बोला मम्मी बाथरूम की वॉल खाली है, इस पर टेबल लगा दे, इस पर काम करूँगा। ये पागल है क्या हुआ? बाथरूम वॉल है, ऐसा नहीं करते, कुछ नहीं करते, इस पर काम करेगा तू? काम पूजा होता है ना, पूजा तो बाथरूम की वॉल पे करेगा। मैं करने को कहीं काम नहीं है, इधर लगाओ टेबल में काम तो करूँ, काम ही नहीं हो रहा, पूजा क्या करूँ आप? करेक्ट। समझ रहे हो? आई डिडंट इवन हैव अ वॉल। डू यू हैव अ वॉल? इफ यू हैव अ वॉल, यू हैव बेटर सिचुएशंस देन मी। Nothing can stop you. The only thing that stops you is you. सुपर। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कैसे आपने स्टार्ट किया और आज हम सभी देख रहे हैं आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर आपने पूरी जर्नी में इंस्टाग्राम की जर्नी बोलो या कंसल्टिंग की जर्नी बोलो, उसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 पॉइंट सीखे रहेंगे जो आज शायद हर क्रिएटर के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या होंगे? The number one thing that every human, not just creator, should know is, जो मुझे ये कि बोलते हैं जिन्होंने बहुत सीख लिया है, मैं उस दिन समझ जाता हूँ कि इस इंसान ने कुछ नहीं सीखा और सीखना शुरू किया अभी। और जिस दिन मेरे पास कोई इंसान आके कहता है कि जिन्होंने भी सीखना शुरू किया है, मैं सिंपली कहता हूँ इसने बहुत सीख लिया है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट दैट आई टेल टू पीपल इज द वेरी फर्स्ट स्किल सेट दैट यू नीड एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ क्रिएटर, एज अ बिजनेसमैन और एवरीथिंग लाइक दैट, द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। मैं इतना सीख के सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि मुझे कुछ नहीं आता। बी ए लर्नर, राइट? लाइक एवरी सिंगल डे मैं इतनी रिसर्च करता ना, लाइक मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, राइट? एंड इसलिए जब मेरे को कोई बंदा के बोलता है जीतू मैं अपने इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया ना, मैं तूने सीखना शुरू किया अभी, मैं तुरंत समझ जाता हूँ। और जब कोई ये आके कहता है कि जीतू अभी सीखना शुरू किया, मैं समझ जाता हूँ इसने बहुत कुछ सीख लिया। Like, so the very first thing that you need is the learning attitude. Be a learner, and मेरा एक रूल है कि रूल नंबर 1, upgrade yourself, right? Because change is the only constant. करेक्ट। So that's why I even tell to my first layer of leaders, because I'm building first layer of leaders as an entrepreneur, and I always tell them this rule: after a year you won't do the same job, because you are A+ player, and A+ players can't do the same job for a while because they need to grow, they want to grow, they are skillful people, they are talented people, and they need growth in their life, right? And the moment you need growth in their life, you also need change in your life, because growth comes with change, but the ability to change only comes when there is an attitude of learning.
So if you have attitude of learning, you will build the ability to change. If you have the ability to change, you'll have growth. And every humans need growth. True. Right? And hence, simply start learning and start having the attitude of learning. It will change every single thing for you. Number one. Number two, the moment I meet creators, I have met creators from zero. I have met creators from 5 million, 10 million. I have worked with Raj Shamani. I have worked with people who don't have any idea what they're doing right now. I have met people who have zero income. I have met people who are billionaire with a B. Right? And one thing I've found in them is they're obsessed with what they do. They are obsessed with what they have in front of them. And every single day when they wake up, they have something to work on. They have a mission, they have a purpose. They do something in their life. Right? And hence, my second foremost thing is stop simply doing things because everybody else around you is doing. And start exploring a lot. True. Like explore a lot, do a lot, fail a lot. And hence, मैं second वाली चीज में आपको 2 रूल दूंगा, मतलब आपके ऑडियंस को 2 रूल दूंगा. The first rule is more rule, which means you do more, you experiment more, you work more, you learn more, you test more, you fail more, you do everything more. The second rule is fast. You do fast, you experiment fast, you learn fast, you test fast, you fail fast. And hence, I always tell people that you need these 2 rules, the more rule, the fast rule. So that the moment you do more, you will fail more. The moment you do fast, you will fail fast. Now, every person who is successful right now, there is a guarantee that he was a failure. But there is no guarantee that a failure, that a person who is right now a failure, वो कभी successful था. उसको guarantee नहीं है. But there is a guarantee कि जो successful है वो failure था. Absolutely. That means you need to fail to succeed. So fail more and fail fast. ज्यादातर लोग डरते हैं फेल होने से. ज़्यादातर लोग डरते हैं कि जब वो फेल होते हैं तो लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे. Nobody have a fear of failure. They only have a fear of judgment. That's what my theory is. Perfect. Right, so Absolutely. yeah, second thing that I tell to people is do more, do fast. Third, stop looking for shortcuts and just do it. Most people try to learn a tip, a hack. Tell me something, Jeetu. What is the easiest way to build a personal brand? Right? What is something that I can do and then I can outgrow everybody. I'm like, just outwork everybody. Just work more than them. Just work fast. Just work every single day. And just work hard. So stop looking for shortcuts. True. The moment anybody comes down to me and be like, Jeetu, can you give me a hack? Can you give me a tip? हाँ देख, मेरे को टिप्पणी नहीं आती, मेरे को हैक हुक नहीं आते, ठीक है, मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, मेरा ये गोल है, एंड देन फॉर दैट गोल आई हैव अ व्हाट नॉट हाउ रूल. बाय द वे, दिस व्हाट नॉट हाउ गोल्डन रूल, मैं इसको प्लैटिनम रूल बोलता हूँ. इट इज अ प्लैटिनम रूल. गोल्ड से भी ऊपर है. यस. सो प्लैटिनम रूल ये कहता है कि व्हाट नॉट हाउ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यू ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट डू यू वांट, नॉट हाउ डू यू वांट. So let's say you want $1 million. How? I don't know. Let's say you want to have 1 million followers. How? I don't know. Let's say you want to do something in your life. How? I don't know. You wanna get rich as well as famous. How? I don't know. You wanna cure whatever you have right now. Let's say you have a disease. How? I don't know. So what not how is a gold. Sorry, it's a platinum rule. It's a maha mantra. मैं इसको कहता हूँ. ये मंत्र नहीं, ये महा मंत्र है. राइट, मेरे दो प्लैटिनम रूल है. एक है व्हाट नॉट हाउ, एक और है इट्स नॉट व्हाट यू क्रिएट, इट्स हाउ यू क्रिएट. इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से. इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू. एग्जाम्पल, विरल भाई, आई लव यू. कुछ फील हुआ? नहीं. विरल भाई, आई हेट यू. करेक्ट. Right? How you tell it. Exactly. So it's not about what you say, what you create, what you do. It's all about how you do, how you create, and how you say. Within a decade, people had so much of information, they are now confused what to do. Clarity नहीं है. So now they are like, कोई बोल रहा है ब्राउन ब्रेड मत खाओ, कोई बोल रहा है व्हाइट ब्रेड मत खाओ, कोई बोल रहा है एग्स मत खाओ, कोई बोल रहा है पानी मत पियो, कोई बोल रहा है राइस मत खाओ, कोई बोल रहा है व्हाइट राइस मत खाओ. People have too much of information. Agreed. By the way, whatever knowledge you have right now, people can get more knowledge, more information than you have
collected in your entire life with one click. And hence, they don't need information. They need somebody who they feel, ये बंदा सही बोल रहा है. And hence, they don't need information, they need the best information. Agreed. They don't need a solution. They need a solution from someone they trust. And that's why you told me ना जीतू भाई कि आप content ज़्यादा सिखाते नहीं हो, Instagram setting वगैरह कुछ नहीं बताते हो, Instagram के hacks नहीं बताते हो. People don't need that. People need कि is Jeetu the right person to tell me about it? Yep. And how do I do that? By relating with them. By changing my way of teaching it. By changing my intention. And hence, it's not what you do or what you create. It's how you do and how you create. वेरी 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 अमेजिंग. मतलब आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं ज़्यादातर लोग इससे रिलेट करते रहेंगे आज की तारीख में. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू जो नॉर्मल पर्सन के क्वेश्चन होते हैं कि आज नॉर्मल कुछ नहीं, मतलब सारे इंसान वो है वो नॉर्मल से ऊपर है. नहीं मतलब स्टिल लाइक यू नो इफ आई एम अ न्यूबी एंड आई एम क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ यू नो स्टार्टिंग विद माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो एक सवाल हमेशा ये होता है कि मुझे अगर अपना चैनल ग्रो करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, यू नो पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कहीं ना कहीं रील्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, रील्स बनाने में भी मुझे स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा. तो क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक वायरल रील में जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ऑडियंस तक पहुंच सके? Got it? Yep, that's a good question. The number one thing that matters in terms of making a reel go viral is not what you say, it's how you say, which we have talked earlier. But uske alawa, there are a few things that I want to tell is, most people, what they try to do is, they try to give everything in the reel. They try to solve every problem that humans have. Don't try to solve problems. Don't try to give value. Change the way you give value, right? So it's not about the information that you're going to give. Now let's convert into a framework of how do you give, because मैंने बोल तो दिया अब करना कैसे है इसको, Correct. right? Or you simply ask yourself, if I am giving information, can I give it on a whiteboard? I'm changing a way, because now if I'm sitting, instead of sitting, can I use a prop? What can be the prop? So number thing, you can use a prop, a whiteboard, a paper, a sheets of paper, a book. So now you write something on the whiteboard and then you teach it. You write something on the book, then you teach it. You write something on the paper, you tear the paper, and then you teach it. So the number one thing is that you can add a prop. Number two is you simply ask yourself, instead of sitting, can I use any other method? Maybe by walking, maybe by sitting not on a chair, but on a stone. Right? So I've seen a lot of people, what they try to do is they don't have a normal setup. They go outside, they sit on a stone, then they create a reel. So now you simply think yourself, instead of sitting normally, how can I make it abnormal, which is not common? Okay? The moment you think what is not common, so maybe if I'm sitting on this, instead of sitting here, if I'm sitting on this table and then creating a reel, it's a little different right now. Instead of sitting behind the light, what if I tell you, shoot from an angle जहाँ पे light भी दिख रही है, बस angle अच्छा रखो. So you simply think what's not normal, right? What people haven't seen it, because now what happens is जब कुछ normal नहीं होता, they're like, hey, what's happening? ये टेबल भी बैठा हुआ है. Correct. ये लाइट लोग तो लाइट छुपाते, कैमरा छुपाते, माइक छुपाते. ये माइक भी दिखा रहा है, कैमरा भी दिखा रहा है, लाइट भी दिखा, सब कुछ दिखा रहा है. So now you go to the opposite side, right? Third is you simply ask yourself, what can I improve? Every time, what can I improve? This is a very simple question, very generic advice, but people don't follow it. True. अगर ये कर रहे होते तो ये पॉडकास्ट नहीं देख रहे होते. Correct. Right? So you simply ask yourself, what can I improve? How can I give more? What can be done better? And stop teaching less, but still start giving more. How? Simply by making sure your audience doesn't get bored with too much of value. Because nobody comes on Instagram thinking, आज तो मैं weight loss करके जाऊंगा, आज तो मैं business चला के जाऊंगा, आज तो मैं ये करके जाऊंगा. Nobody comes on that. Nobody comes to social media with the intention of doing something great in their life. Right? And hence, what you try to do is, you try to make her in such a manner, वो बंदे किसी भी situation के अंदर हो, वो इतनी interesting है कि so you work on the art of creating the reel, creating the content. That is more important, instead of thinking about what topic to choose, what niche to choose. They're good questions, by the way. It's not that they're not at all important, but the majority of the focus, or I would say the major focus that you should focus on is, how do you put the reel out? अभी जैसे कल परसों हमारा शूट है. So me and my manager were simply discussing what are the formats we're going to use. So we came up with a format of flipping charts.
तो अभी हम वाइट बोर्ड नहीं करेंगे, हम चार्ट्स करेंगे, चार्ट्स कहते हैं हम डिस्कस कर देंगे, हम रील्स को रिव्यू करेंगे। तो सब लोग रिव्यू कर रहे हैं यार, व्हाट कैन वी डू डिफरेंट? सो व्हाट वी विल डू इज वी वोंट डू रिव्यू रील्स, आई मीन इन अ नॉर्मल मैनर। हम एक वाइट बोर्ड रखेंगे 5 फीट का मेरे आगे, और मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, वो रील उसके ऊपर प्ले हो रही है और मैं उसे देख रहा हूँ, ये क्या प्ले हो रहा है, इंटरेस्टिंग एंड नाउ आई विल रिव्यू द रील। So I just simply asked myself, what can I do something which is not normal? I added this. Prop. I can use a book. Let's say, stop doing this. Instead of that, I can simply say, stop posting reels. मैं लिखूंगा posting reels. Stop posting reels. हाँ, कुछ अलग तरीके से। Right? So I added a prop now. You can do that. You can do abdominal stuff. And there are like a million other ways. But these are 2 ways. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अभी अभी जस्ट आपसे मैं एकदम कंप्लीट रोड मैप चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत सारी बार अपने पेजेस को रीस्टार्ट किया है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो सोचते हैं कि यार मुझे पहला बेंचमार्क मिल जाए, एंड ऑब्वियसली इफ आई एम अ न्यू क्रिएटर देन फर्स्ट बेंचमार्क वुड बी 10,000 फॉलोअर्स। Okay. तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं 0 फॉलोवर पे हूँ, मुझे 10,000 फॉलोवर पे जाना है और विद इन 30 डेज जाना है, तो क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए? There is only one rule. Post more, experiment more. Nothing else. You don't do anything else. You don't have a roadmap. You don't have a plan. You don't have a structure. You don't have a team. You are completely lonely. You are scared. And you don't know anything. One rule. Just post more. Just experiment more. Right? So what you do is you simply think of, in the next 30 days, I'm going to put 100 reels. Jitu, how do I put 100 reels? Well, you want 10,000 followers in 30 days. हाँ, Okay? तो you have So, if you want more output in a less time, you need to do more input in a less time. If you want to get extraordinary results, you need to put extraordinary efforts. correct. Simply post more, experiment more. Now, what most people do is they post more, but they do experiment more. They post the same stuff and get the same result. If you're posting the same stuff, you will have same results. And simply start experimenting more with the different formats. Correct. What formats, Jitu? Well, just go to your competitor list. You just go to Instagram and check which reels do you like the most. Is it about the content, or is it about the way the guy is giving the content? And simply copy those frameworks. सुपर। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए पोस्ट करने के टाइम पे? क्योंकि Don't think about क्या 3 चीजें रख दूं मैं वहां पे, क्या चीजें चेंज करूं। हाँ, the only thing that you should focus on is content. कंटेंट के अंदर जीतू क्या चेंज कर सकता हूँ? दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि पोस्ट करने से पहले हमें कंटेंट में क्या देखना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जो आपके फर्स्ट फ्यू सेकंड्स है, द फर्स्ट 6 सेकंड्स, राइट, विल देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स। एक होता है कि सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है सजेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट। तो सर्च बेस्ड और सजेशन बेस्ड। सर्च में इंसान जो होता है वो एक इंटेंशन क्रिएट करता है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है। सजेशन बेस्ड में उसको जो फीड होती है वो उसकी फीड में इंटरप्शन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कभी ये रील आ गई, कभी वो रील आ गई, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कुछ ना कुछ आता है। In that case, you need to understand one thing: he has thousands of options. So you simply ask yourself this question: out of those 1,000 reels, why would he choose to click on my reel? And hence, we need to make sure that first 3 seconds or this first 6 seconds, मैं first 6 seconds emphasize करता हूँ, 3 seconds कुछ नहीं होता, first 6 seconds are the most important part in your reels. And I put my 80% of the time, focus and energy in those first 6 seconds. 6 seconds. Right? Hooks are the 80% of the equation. So just focus on hooks. That's number 1, which is a good question, by the way, if I put it in this manner. And number 2 would be key thumbnail on Instagram especially. Why? There are 3 areas where you can get new audience from. Number 1, your explore page. Number 2, your search page. And number 3, your reels tab. इसके अलावा और कोई जरिया ही नहीं है जहाँ से लोग आपको ढूंढ सकते हैं। एक्सप्लोर पेज पे सिर्फ कवर पेजेस दिखते हैं और थंबनेल्स दिखते हैं। सो अगर आपको एक्सप्लोर पेज रैंक करना है और आपका थंबनेल जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो रैंकिंग नहीं होगी, क्योंकि लोग क्लिक नहीं करेंगे। अगर लोग क्लिक करेंगे तो रैंकिंग होगी। एंड टू हैव मोर क्लिक्स, जिसको हम CTR कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट, इफ यू वांट टू हैव अ मोर क्लिक थ्रू रेट, सिंपली ऑप्टिमाइज योर कवर पेज। सो नंबर 1 आपका थंबनेल आ चुका है। रील्स टैब 6 सेकंड में क्यों बोलते हैं लोग? रील्स टैब पे 1000 रील्स होती है, आप चूज वही रील करते हो जिसका स्टार्टिंग पार्ट इंटरेस्टिंग हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो यू मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा है। कितने लोग के मैं देखता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन में हाय हेलो करते रहते हैं, हे आई एम जितेंद्र, हे आई एम दिस एंड दैट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, डोंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डोंट इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, जस्ट जंप इनटू द टॉपिक, डोंट गिव अ इंट्रो यूज्ड टू वर्क इन लाइक ओल्ड 5-8 साल पहले एक काम करता था जहाँ पे लोग इंट्रो देखते बहुत मस्त
मत बनाओ इंट्रो, डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक. People don't have time, people don't have attention. ट्रू 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 These are the few things that you can follow. बाकी तो there are zillion other things that to follow. 100%, 100%, 100%, yes. रेवेन्यू के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव स्टार्टेड जर्नी, चलो कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स बन गए, क्या क्या तरीके हैं जिससे पैसा कमा सकते हैं इंस्टाग्राम को यूज़ करके? मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि you only do one thing, which is you sell. You can sell a physical product, a digital product, a software. You can sell somebody else's product. You can sell your own product. You can sell services. You can sell your consultations. You can do any of this, but you sell. एक होता है selling. दूसरा होता है brand deals. In that also you sell because ultimately you are selling a brand. Putting some other brand. Yeah, exactly. But ultimately थोड़ा अलग है. So yeah, either you sell something or you do a brand collaboration. These are the two most common ways. अब सेल के अंदर जो होता है, मैं कहता हूँ कि यू कैन डू अफिलिएट. मतलब आप सिंपल सा किसी और का प्रोडक्ट, इफ यू डोंट हैव योर ओन प्रोडक्ट, यू कैन हैव समबडी एल्स प्रोडक्ट, यू कैन पुट अ लिंक, हैव अ कमीशन, मेक मनी, बी हैप्पी, राइट? इफ यू हैव योर ओन प्रोडक्ट, learn how to make sales, learn how to make a good offer. By the way, most people think that they need a good product. You need a great product completely too. You need a good product completely too. But you need a great set of marketing. Because the best known will beat the best. Even if you're the best, but there is somebody in your industry who's best known, he will beat you. And simply start learning how to be the best known. Start learning how to do marketing. Start learning how to do sales. Start learning how to create an offer. Right? Majority of the people, they come down to me and they're like, Jitu, kya hai aisa post tu jisse viral ho jao? I'm like, even if you go viral, what will you do with the audience? You'll sell something, right? And hence you need to start learning how do you make sales. And that's why out of 8 crore creators, only 1.5 lakh are able to generate money. अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल रही है लाइक इंस्टाग्राम को लेके. जी. लेकिन एक डार्क साइड हमारा इंस्टाग्राम का ये भी है कि पीपल से कि चलो वो जब तक आपका ग्रोथ आ रहा है तब तक तो सारी चीज़ें हैप्पी 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 दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल आ जाएगा जब भी आपका ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाएगा. इनफैक्ट कभी कभी ये भी होगा कि लोग फिर आपको जानेंगे नहीं ज़्यादा, लोग पहचानेंगे नहीं, जो फैंडम पहले आप एंजॉय करते थे वो नहीं करोगे. मैंने एक इंटरव्यू देखा था आशीष चंचलानी का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसने स्ट्रेस की बातें की थी, कहीं ना कहीं उसने ये सारी बातें की थी कि लाइक क्या एक क्रिएटर की लाइफ कैसे स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जाती है. तो क्यों होता है और कैसे ये इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं? Every creator, every founder, every business owner will once go through a phase in their life where nobody will be there. Whatever you do won't work out. The more efforts you put, the lesser output you will get. And everything you feel will go against you. And in that moment, you will feel helpless. You don't know what to do. You will be lost. It's a test. But how to overcome it? I learned this from my mom. So I've seen my mom working 14, 15 hours every single day for last 15 years. She's the most strongest person that I will ever know on this planet. She has raised me without any help, without anybody, without any skills. When she came to Mumbai, see, I'm a single parent child, so my dad wasn't there with me. And let's reveal it today. So 2011 mein my dad left us, and 2011 mein my mom was pregnant. Okay, and when my mom was pregnant, doctors said it, either my mom will survive or my sister will survive. Both cannot survive because my mom was too weak to give birth to a baby. So either my mom is going to survive or my sister is going to survive. Now either of them is going to die, right? In that moment, when any one of them is going to die, doctor asked a very simple question, that somebody needs to sign it, that if any one of this dies, you need to take the body and we are not responsible for it. So obviously they had to call my dad because that's the one. They called my dad and be like, sign kar do so that we can do the operation. Now imagine my mom is sitting in the operation, gonna leave a baby out of it. Either of them is gonna die. The doctor is out of the theater, asking my dad to sign it. My dad ran away. On that day, he left. From that time,
My mom is the only person who has looked after me. My mom is the only hero that I have. My mom is the only person that I admire. My mom is my ideal. And she is the one who has taught me so well that today I am because of her. And I've learned this from her. When she came to Mumbai in this condition, she didn't even knew how to talk in Hindi. Because she was she used to stay in her village. She stayed in the village for her entire life, right, in Rajasthan. अभी लड़कियों को दबा के रखा जाता है. And when she came to Bombay, she didn't even knew she didn't knew how to speak Hindi. She didn't have any skills because she never went to school. She doesn't even know what she will work in Mumbai. She was still able to raise 2 kids in Mumbai in a fucking expensive city. If she can do it, I feel every human on this planet can do something. True. Because my mom didn't know anything. She was working hard more than 99% people on this planet. And in those days, there were people who used to cheat on my mom and simply be like, आपका इतना ही पैसा हुआ है. My mom knew it. That the guy is cheating on him and telling him कि इतना पैसा हुआ है. But my mom doesn't know कितना पैसा हुआ है. She's like, cool, I'll work like 5 more hours today and will make some amount of money that can feed my kids. And on that day, I learned a lesson that if you don't know how to do it, just do it more. If you don't have skills, do something, you'll figure it out. She is the one who made me realize that, beta, you don't need anything in your life. You just need one thing in your life. The art to execute, even if you don't know how, even if you don't have the courage, even if you don't have the ability, even if you don't have the skill set, but you still do it. And when you don't get success, trust me, just do more. And I've learned this. I've seen this in my mom every single day. When there were days when she didn't have food, there were days when nobody respected her, there were days when we didn't have anything in our life, but we were just thinking of how can we survive today, right? There were days in COVID where we didn't have food, and we literally had to क्या बोलते हैं, relatives के हमने ताला तोड़ दिया था, and then we went to their place. We told them obviously कि we are going to a place because we don't have food at our place. We went to their place, we had ration there. And if the only reason that me and my mom were able to survive this kind of days is simply because we worked more than 90% of the people on this planet. And trust me, if today you ask me, Jitu, who is that one person? Who is your idol? Who is that one person who you admire a lot? It's my mom. My mom doesn't know how to read, but I can write a book for her. My mom is somebody that doesn't know how to talk in Hindi, but she can communicate her love very easily. Maybe she didn't have the time and money, but she did whatever she could. You are really blessed with your mom, actually. And I think this is the only reason why you are so strong. As in, I was just going through your career, everything, like I was researching about on your career and all. I just got to know that you have failed for 13 times and then you have gone through. How was that moment actually? How did you figure out the right career path? So, I failed in more than 13 careers before doing what I do right now. And the first career that not the career I would say, but the very first thing that I did was actually working in a stationery shop. Right, so I had a dream that every Marwadi, every Rajasthani has their own shops. I was like, okay, cool, I'm gonna build my own shop. That was my dream. Okay, I can have my own shop. Every problem that I have on this planet will be solved with that one shop. Which later on came to that that's not the case. Every person who has a shop also has problems. So this is not the case. Then I tried being a gym trainer in a gym. So I used to open gym at 5 a.m. in the morning, come back home at 4 p.m. and then write content, and then evening learn content, right? Sleep at 2 or 3 a.m. and then again wake up at 5 a.m. go back to gym. So I've done gym training. I've done labor work. It's not a career, but okay, I don't count that as a career. But I've done labor work for 15 years. I've tried shooting. I've tried editing. I've tried WordPress development. I have tried ebook designing. I have tried going to people's houses and shooting and writing content for them. I've tried social media management. I've tried
drop shipping. I also, when I said drop shipping, I literally used to talk to suppliers from China and then sell stuff to America. Literally किया है मैंने ये, मैंने बेचा $2,500 के प्रोडक्ट्स मैंने बेचे. So I've done that. I've grown 3 pages, and every single time I tried a stuff, I failed miserably. Right? So the first career that I tried, I failed. Second, failed horribly. Third, I tried, was like, this is the one. Failed. Now imagine you try one career, you fail. You try second career, you're like, this is the one, you again fail. You try third and be like, सब fail होते, शायद मैं भी इसलिए fail हो रहा हूँ. And hence you are like, this is the one, you fucking fail. You try fourth time, and you're like, ये तो पक्का हो जाएगा, इस बार तो कर ही लेते. You again fail. And fifth time I went to my mom and I asked her, Mama, this बार पक्का I'm gonna do it. Trust me. And she said, I don't trust you. Now imagine, see, when I was a kid, I had nobody with me, no friends, nothing. The only thing that I had was my mom. Imagine the only thing that you have right now within you to work is your mom. Imagine on that day I realized I don't even have my mom with me. And I again tried after that. I again failed. And it's fucking painful to tell you that in those moments when I'm trying something, I'm like, okay, maybe this is the condition, this is the problem. And you're like, everybody's telling you that you are a fool, you don't know how to do it, you are not the one, you're a kid. And in that moment you feel maybe they are right. Every single day you literally live that everybody around me who was saying that I can't do it, it's actually right. And then all the what ifs comes in your mind. What if I'm actually a fool? What if I actually don't know anything? What if everybody around me saying that you are a kid and you can't do anything is right? Guess what? After that also you try and you are like, अगर इसमें मैंने कर लिया तो अब तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा. But after that also you fail. Not 1, not 2, not 3, not 5 times, not 10 times, not 12 times. You try 13th time and you fail again. And it's fucking painful. What do? Do more. I tried again. It worked. What was the major mistakes and learnings from this failures? A lot of them. The biggest mistake was I always used to think that it's me who is doing it. My biggest mistake. I always felt that I am the one. I always used to think that it's me who is the one who is, taking me from here to here. But I never realized I was just a medium. I was just an actor playing my role. It was him who was taking me from here to here. My biggest learning in my entire life was I don't own anything. Nothing is mine. Nor what I do is because of me. And trust me, the day you realize, and the thing is yours, the day you realize whatever you do is not something because of you, is the day you will shed each and every part of your ego. And my biggest career lesson, or I would say biggest mistake, was my ego. Because on a very early age, I had a lot of problems at a very early age, but on a very early age, I also had a lot of success, right? So I made my first 2 lakh rupees when I was 17. I have failed miserably after that. I went bankrupt and everything, but I made my first 2 lakh rupees when I was 17, right? क्या काम किया था तभी? Drop shipping. I had an ego boost. I was like, I'm the one. My biggest lesson to you, trust me, the day you feel that you are the one and you are doing everything, you are the one who will take all the stress. The day you feel you are not the one, every stress goes to him. Choose whatever you want. Both are right, whatever you want to do it. I don't want to take any stress. मैं simply ये कहता हूँ रोज सुबह उठ के कि भगवान, use me the way you want to use, create impact that you want to do, and use me as a medium. I would be blessed to be used as a medium. Today I'm just doing this podcast. It's not me who did something in his life because of which I got the opportunity to be on a podcast and then transform these lives. It was him who wanted you guys to transform your life, and then he just chose a mediator. He just chose me as a mediator. I'm not a coach. I'm not a creator. I'm nothing. Your success, the people who are watching, your success was decided. Your success was destined. It was true कि तुम्हारी success लिखी हुई है. I am just a mediator in that. I'm not a guru. I'm not a coach. I'm not a creator.
I'm just a piece of character who has come here to play a role in your success which was written. So just do your stuff. अमेजिंग मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मुझे 10 बार क्विट करने का मौका आ जाए, थॉट्स आ जाते कि नहीं यार अभी ये नहीं करना है, काम करते वापस जॉब करते, जो करता था वही करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट आपने इतनी सारी बार बिजनेसेस चेंज किए, सारी चीज़ें चेंज की, फिगर आउट किया क्या करना है। इट्स अ टफ डिसीजन, राइट? Yeah, and it's not like that I didn't want to quit. I wanted to quit badly. I really wanted to quit. I wanted to end my life, to be honest. Right? I was shit scared. I wanted to run away. But what if I tell you I didn't even have the option to run away? Because if I do that, everybody around me would simply say, बाप के गया, बेटा भी चला गया. And now my mom is alone. So I didn't have the option to even quit. And I badly wanted to quit. But guess what? My mom's rule. Even if you don't feel like doing it, beta, do it. Even if you don't feel like working today, work. If you feel, she is the one who has taught me that doesn't matter what your feelings are, just show your middle finger to your feelings and do the work. Kudos to your mom. COVID का टाइम था, and this is the first podcast I'm sharing this story. First, I have never shared this in my sessions also. So in COVID, we literally didn't have the money to buy food, but I had internet connection because मैं अपने relative के घर पे था. So नीचे पता है वो खाना देते थे, खिचड़ी वगैरह. Some days we lived on that. Some days we had extra ration saved in my relative's house. We lived on that. And while surviving, मैंने ना 4-5 महीने में कुछ स्किल्स सीख सके. 3-4 महीने तो लॉकडाउन ही था. तो उन 3-4 महीने में 10,000 रुपये कमाए थे मैंने. 9,800 या 9,900 10,000 रुपये कमाए थे मैंने. और मेरे पास जो फ़ोन था जिससे मैं काम कर रहा था, वो फ़ोन इतना ब्रोक फ़ोन था कि उस पर पोस्ट करने के लिए मुझे 15 मिनट लगते थे. तो एक पोस्ट को प्रेस करने के लिए टेक 15 मिनट्स बिकॉज वो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, चल रहा है, इट विल टेक 15 मिनट्स. इन दैट मोमेंट आई न्यू आई नीड अ न्यू फोन. इमेजिन यू डोंट इवन हैव मनी एंड यू डोंट इवन नो ये लॉकडाउन कब खत्म होगा. यू हैव नो आइडिया कि अगर ये लॉकडाउन खत्म हो ना हो, लेट्स से लॉकडाउन चलता है 6 महीने के लिए और तुम्हारे घर पे राशन नहीं है, नोबडी इन माई एरिया वुड हेल्प मी टू हैव माई राशन. जो नीचे खाना आता है दिन में 1 बार आता है, 2 बार आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है. आई डोंट इवन नो वेदर वी आर गोइंग टू सर्वाइव और नॉट. इट्स अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट. बोलने और सुनने में बहुत डरावना लग रहा होगा, सोचो मैंने जिया है वो. राइट, आई वाज शिट स्कैर्ड एवरी सिंगल डे इन दैट मोमेंट. In that moment, when I had 10,000 rupees in my bank account, you know what I did? I purchased a phone. क्योंकि इससे और आएगा आगे. Yep. In that moment, मैं ATM से पैसे निकाल के आ रहा था, and I somehow just escaped from police and got my mom's card. तब मम्मी का बैंक अकाउंट था, मेरा बैंक अकाउंट नहीं था. So I just somehow got my mom's card, somehow escaped from police. ATM से पैसे निकाल लिया मैंने, एंड पैसे निकाल के मम्मी के पास आया. आई शोड माई मॉम मनी एंड शी वाज वेरी प्राउड. चलो बेटा कुछ तू तो है एटलीस्ट जो घर का राशन ला सकता है. दैट वाज द ओनली थिंग दैट वी नीडेड उस टाइम पे, फूड. आई टोल्ड मम्मा आई नीड अ फोन. विद इन दोस 2 seconds फ्रॉम दिस टू दिस माय मम्मा स्लेप्ट. नीड फोन? पागल बेटा, नहीं पता ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कोई काम नहीं दे रहा अपने को, पैसे नहीं है. पापा को कॉल किया, पापा कॉल नहीं उठा रहे. जनाब, जब घर पे कोई पैसा नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं हो, तब अंदर से एक आवाज़ आती है कि बेटा मत कर. मेरे अंदर बोला कि जीतू मत कर, फिर क्या बोलते, परचेस कर फ़ोन. एक और आवाज़ थी अंदर जो कह रही थी जीतू परचेस कर फ़ोन, फिगर आउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ खाना तो मिल ही जाएगा. ट्रस्ट कर भगवान पे, खाना तो कोई ना कोई दे ही देगा, नहीं भी दे तो 2 दिन भूखे सो लेंगे. दैट वॉज ऑल्सो अ सैक्रिफाइस. दैट मैं छोड़ो, मैं और मॉम दोनों भूखे रह लेंगे, बट ये फ़ोन चाहिए मेरे को. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने मॉम को पैसे दिए थे क्योंकि पहली इनकम तो मैं मॉम को दूंगा ऑब्वियसली. एंड देन आई एम टेकिंग माई मनी फ्रॉम माई मॉम एंड बी लाइक, प्लीज़ मॉम आई नीड अ फोन. एंड शी इज़ लाइक नो. And then I had to say a statement which broke me and broke my mom. ये मेरे पैसे हैं. It broke me
इफ broke my mom, I still have goosebumps. मेरा स्टिल हाथ शिवर कर रहा है ये बोलते हुए, क्योंकि जब मम्मी के सामने हुई है मैं, जहाँ पे मेरी औकात नहीं है कि मैं अपनी माँ से बात करूँ, मैंने जब मैंने बोला ये मेरे पैसे है, मैं ऑलरेडी अपनी आंखों में 100 गुना नीचे गिर चुका था. इन दैट मोमेंट ऑल्सो मैंने मॉम के हाथ से पैसे छीने. My mom was on the verge of cry. I immediately ran away because I knew if my mom cries right now, I won't be able to buy this phone. I ran away from my house, called one of my friends, Shubham. Can we get a phone right now? I have cash. Cash kahan se? Can we get a phone right now? I don't know how. We somehow escaped from police, got to a building where there was a guy who used to sell phones, gave us a phone for 9.4. उसने भी 500 का डिस्काउंट किया हमें. Blessed to have that discount also. I made a sacrifice in that moment. I knew if this doesn't work out, maybe for 3-4 days, maybe for a week, I need to be hungry. I don't have any idea. Maybe दिन में शायद एक ही मील खाना मिले हमें को. मुझे नहीं, मॉम को भी. I did that sacrifice. Guess what? I don't know how, but कहते हैं ना कि जाकिर भाई बहुत बढ़िया लाइन कहती है कि करने वाले का कुछ ना कुछ हो जाता है. हमें खाना कहीं ना कहीं से मिल गया, बट जैसे ही वो फ़ोन आया मेरी इनकम थोड़ी सी और बढ़ gई. Then your mom will be proud. I mean my mom was, बहुत टाइम लगा उनको प्राउड होने में, बिकॉज आई फेल्ड अ लॉट एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हर. मैंने बहुत सारा पैसा लिया, उनका डुबाया है. आई वोंट ब्लेम माई मॉम, टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं उनकी जगह पे होता ना तो मैं भी यही सोचता. जब मेरी मॉम ने मुझे ये कहा था कि बेटा आई डोंट ट्रस्ट यू, ऑडियंस लिसन टू मी, ट्रस्ट मी, शी इज़ नॉट डिमीनिंग मी. I will tell you what she wanted to tell. Let me decode it for you guys. She was saying that, Jeetu, I am working 14 hours, 15 hours every single day. If you lose money like this, if you fail like this, trust me, I will die. ये पैसा मेरे पास नहीं है और मैं और नहीं कर पाऊंगी. पागल मत बन, मत कर इतना ट्राई. ढंग की जॉब कर ले, सेफ रहेंगे अपन. Correct. Because she was not surviving every single day. Sorry, she was not living. She was just alive in front of me. And she was constantly saying me, I can't live. I won't be able to live. Do you get me? But ये वो बोल नहीं पाई बेचारी, तो बोलना पड़ा उनको, I don't trust you. And I don't blame her. I love her. Because she said me that thing on that moment, it broke me so hard. It gave me so much of pain that today I am because of what happened on those days. And I'm blessed to have that moment. एक वो दिन आपने जो देखा था जब ये आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, और आज आई थिंक आप बहुत ही सक्सेसफुली आपने ग्रो कर लिया है, तो वो दिन और आज के दिन क्या डिफरेंस दिखता है? I understood the importance of making more money. At the moment you have more money, you have a better life. But the moment I had more life, the moment I had more money, I realized it's not just money. तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ लगती थी कि बस पैसा कमा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आज समझ में ऐसा पैसा सारी चीज़ नहीं थी. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई रिस्पेक्ट मनी, बाय द वे. I love money. See, the intention might be different to make money, but I respect money because today whatever I am able to pull off is because of money. Right? So I do love money, but it's not just money. For me, it's the impact, but I'm pretty sure deep inside me there is a human who is seeking for love and wants love from another human. And every human is doing what he is doing is simply because of one thing. He is again seeking love. कमिंग बैक टू इंस्टाग्राम क्वेश्चन, लोगों के मन में हमेशा एक ये सवाल होता है, इंस्टाग्राम कोच जीतू, लाखों लोगों को अब तक आपने सिखाया है कि इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना, लेकिन आपके अकाउंट में अभी तक 1 मिलियन क्यों नहीं आया है? गुड क्वेश्चन. सचिन तेंदुलकर का जो कोच है उसने उतनी सेंचुरीज नहीं मारी है. धोनी के कोच ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता शायद. कपिल शर्मा का जो कोच होगा, मे बी उन्होंने उस इंटेंस सिचुएशन में उतने रन नहीं बनाए होंगे, बट दे आर कोचेस एंड दे हैव बिल्ड प्लेयर्स हु कैन डू दैट. अमेजिंग, सुपर. जस्ट रिसेंटली मैं अभी आपका अकाउंट देख रहा था, आपने अपना पुराना अकाउंट बंद करके नया अकाउंट स्टार्ट किया. इसका कोर रीज़न क्या है? मतलब कहीं ना कहीं वो पुराने अकाउंट में क्या व्यूज़ नहीं आ रहे थे?
a lot of people think that मेरे अकाउंट बन गया बिकॉज व्यूज़ नहीं आ रहे थे बट ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है. सो माई अकाउंट व्हेन वाज एट 11,000 फॉलोअर्स वो 11,000 से 8,000 पे आ चुका था. आई वाज नॉट हैविंग व्यूज़, एवरीबडी वाज अनफॉलोइंग मी एंड माई ग्रोथ वाज गोइंग डाउन. उस टाइम पे बाउंस बैक किया था. देन माई फॉलोअर्स वेंट टू 333K. तब कुछ समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ. आई वाज नॉट एबल टू पोस्ट फॉर 6 months. आई वेंट ऑफ फॉर 6 months. आई वाज अंडरग्राउंड एंड देन those 6 months my followers went down from 333K to 265K. No engagement, no followers, everybody's unfollowing. 75,000 followers I lost. Still bounce back. Do you think कि बिकॉज मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे या मेरे व्यूज नहीं आएंगे उस वजह से मैं अकाउंट डिलीट कर दूंगा? जब मैंने ऐसे सिचुएशंस देखी जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स 70-80 फॉलोअर्स गिर रहे, जब मैं वो क्रैक कर सकता हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं था. बाय द वे, द लास्ट डेज जब हम अकाउंट डिलीट कर रहे थे, we had 2,000-3,000 plus followers. So like it was growing the last initial days. I don't know how, but I don't know what got it. So basically जब लास्ट डेज आ रहे थे तो अकाउंट ग्रो रहा था, नंबर्स आ रहे, एक रील वायरल चली गई एंड 3-4 फॉलोअर्स बढ़ गए. उस मोमेंट भी शायद भगवान टेस्ट कर रहा था कि बेटा अकाउंट तो ग्रो हो रहा है, रुकेगा. In that moment I knew it's a test. My mission is more than numbers, which is impacting people's life. I know everybody thinking or listening to this podcast, they are like, भाई ये बच्चा है अभी 2 दिन मिशन चलाएगा उसके बाद टाइम लाइन पे आ जाएगा. Every time I take or make a decision, everybody feels I am a psycho. But here's my point. Whatever decision you make right now, if people thinks that you are a psycho, it's their problem. But if after 6 months they still think you are a psycho, it's your problem. Because you haven't done enough in those 6 months to prove them that you are not a psycho. And hence, maybe people might call me a psycho right now. It's completely fine because I totally understand them. They don't know me yet, right? It's my time to follow my mom's rule. Just do more, right? And the reason I deleted my account, come back to your point, just telling you that views गिर रहे हैं, उसको उठाना not a big deal. खुद के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, and this is what I do for a living, right? So that's not the case. The only case is tell people, think beyond numbers. Think beyond numbers. You can do it. Everybody can do it. Anybody can do it. And you can do it now. If I can restart, you can too. If I'm starting right now, you can too. When I deleted my account, a lot of people came to me and said, Jeetu, if you can delete your account and restart, trust me, I can start at night right now. मेरे को समझ में आ चुका है वैसे. And all these experts that I know will be hell motivated to start their account. And that's how I'm spreading my message of what I do and why I do, so that experts can get inspired and tell, let's think beyond numbers. Let's grow our account. Let's impact people's life. And together we can change the way humanity lives. अमेजिंग. और बहुत अच्छे तरीके से आपने मैसेज दिया क्योंकि आपने खुद ने करके बताया है. या लोग खाली ज्ञान देंगे, जब करके दिखाया जब कि मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो बंदा बोलता है कि here's what I do if I deleted my account. बोला instead of creating this reel, let's just do it, right? I did it, but it's fun to be honest. जब मैं पहली बार अकाउंट मेरा डिलीट कर रहा था, I was numb for 6 hours. So I knew I'm going to delete my account at 9 p.m. By 3 p.m., I stopped working. I stopped thinking. I was shivering. I didn't know what to do in my life. And I was still like, क्यों करता हूँ वैसे? Sometimes you feel ना कि what are you doing, bro? Like, लोग ना बहुत बार कहते हैं मुझे कि भाई तू ना पागल डिसीजन बनाता है और कभी ना कभी मरेगा. जितनी बार मैं डिसीजन बनाता हूँ ना, हर बार मुझे वो आवाज़ें याद आती है जो मुझे कहती है कि भाई सोच ले, इस बार किया तो गया, बहुत बार बच चुका है, इस बार नहीं बचेगा. Guess what? You still do it. For those 6 hours numb, मैं 2 घंटे मॉम के लैप में सोया था and I didn't want to do anything in this world. I was just talking to my mom. Because I knew if I leave my world, see, Instagram was my another wife, एक ही wife है. Instagram was my wife, right? I consider content as my wife. I have married my content. When you don't have content, it's my identity. Imagine I'm losing my identity. What do I have apart from that? My mom. I went to my mom, sat in her lap for 2 hours, gave me a little bit of strength. I didn't tell her कि I'm going to delete my account. I know she's gonna again be like, जो करने का. But
I didn't told her. I went out for a walk. On the walk, I was literally crying because those voices in my head saying that जीतू इस बार गया तो गया, भगवान की कृपा से बहुत कमा लिया, बना लिया है, मेंटेन करो बेटा, अब इतना ऊपर नहीं सोचने का, जितना है उतना खुश रहने का, राइट? ये थॉट्स आते दिमाग में, आए दिमाग में थॉट्स। बहुत आवाज़ आई जो कह रही थी, मना कर रही थी। बहुत लोगों ने मुझे मना भी किया था, बहुत लोगों ने कहा कि ये साइको डिसीजन है, बहुत लोग मेरे मुंह पे कह के गए थे कि ये पागल वाला डिसीजन है। बहुत बार अकाउंट डिलीट करने के बाद भी ना कुछ लोग ऐसे मिले कि साला सामने खड़े हुए, मैं बोल रहा हूँ मेरा ये मिशन है, और दूसरे बंदे को ये कह रहे कि ये देख डिलीट कर दे अकाउंट। इन दैट मोमेंट ऑल्सो आई नो वट आई एम डूइंग एंड आई एम गोना डू इट एंड आई स्टिल डिड इट। सुपर सुपर। जब आपने नया अकाउंट बनाया, रीस्टार्ट किया, क्या स्ट्रेटेजीज उसमें अप्लाई की जिससे वो फास्ट ग्रो हो गया? Two studies I told you, more fast. In the first 20 days, we did more than 45 posts, I think. The only two rule I follow. I teach what I preach. सुपर सुपर। ग्रेट ग्रेट जीतू भाई, ग्रेट। इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीज़ें आज सीखने मिली, लाइफ के बारे में भी, ह्यूमंस के बारे में भी, और इंस्टाग्राम के बारे में भी। सो great work, and we wish you a very 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 all the best in whatever thing you are doing. आज इतने सारे coaches को आप help कर रहे हो, really you are doing great thing, and I am in full support with you. Thank you so much for calling me out. Thank you so much for being a mediator for me.